other candidates coming for interview also. If you want, you can stay and observe them. Okay, sir. Yeah. Mr. Pankaj, Sir, आपका बारे में बता दीजिए. sir, I am You want to speak? You want to speak in English? sir. I am comfortable in both the languages. ठीक है, आप इंग्लिश में बोलिए पहले. लेकिन दिल्ली में है तो मैं कौन सा प्रेफर करूं सर? दिल्ली में मेरा रिकमेंडेशन इज हिंदी. खाली ठीक है सर. इंट्रोडक्शन ऑफ खाली इंट्रोडक्शन ऑफ अंग्रेजी में दे दो, बाकी सब जगह में जहां आपको हिंदी में अच्छा चलता है हिंदी में जाओ. ठीक है सर. ठीक है सर, मैं मिक्स में कहूंगा. ठीक है हम्म. सर. Sir, I am a graduate in BCom and postgraduate graduate in MBA. I have 5 year experience of working in IDBI Bank as in credit, and I also have 1 year experience of working in Bank of Baroda as a clerical grade. Total, I have 6 years of experience. I have been qualified. I have done all my studies from Bangalore, and I belong to Jaipur. That's all about me. Can you tell me you did MBA in which subject? That also you should tell. I did MBA in finance. Finance. You should tell that clearly. And Yes, MBA in finance. Your certificate has MBA in finance. yes, sir. उसको लिखा हुआ ना कि because in some candidates certificates from Anna University and all वो लोग खाली मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं जिसमें मार्केटिंग और फाइनेंस नहीं डालते. आपको तो डाला हुआ है ना. हाँ सर, डाला है. वेरी गुड. Excellent. Mr. Pankaj, what is your age now? Sir, at present I am 31 running. Yeah. You are in which scale? IBA scale or CTC scale? Uh, I am in IBA scale, sir. IDBI is in IBA scale. I, IBA scale, scale 1 or 2? Scale 1, sir. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. आपने कुछ एग्जाम पास करने के लिए चेष्टा किया है? JA, IIB, CA, IIB? Actually, sir, I tried, but after joining, actually, I started MBA after joining bank. So for 2 years, I was doing MBA, and then I also started for FRM preparation. So therefore, I couldn't clear GIB and CIB. तो ठीक है, कोई बात नहीं. कैन यू प्लीज आपने कुछ सर्टिफिकेट लेके रखा है फ्रॉम योर बैंक फॉर दिस, Yes, फॉर sir. अपीयर? Performance रखा है. certificate. Yes, sir. Performance certificates, sir. Top performing credit manager and all those certificates I have. But those are अच्छा, वेरी internal. गुड. इंट ना उसको कॉपी दे सकते हैं ना आप? यू कैन Yes, प्रोड्यूस sir. कॉपी टू देम. Sure, sir. I'll I give. suggest I suggest you take one copy of all the correspondence with IDBI, not the leave letter, other things. Sure, sir. सब कुछ लेके जाइएगा, जो उनको चाहिए उनको लेने दीजिए, दूसरा वाला छोड़ने दीजिए. आपका जो फ्रेंड है उनको इंटरव्यू हुआ है, उनका एक्सपीरियंस क्या है? इज सिमिलर टू yours और समथिंग एल्स? Actually, sir, he has a different experience. He has experience of working in branch and also regional office. And हाँ. my experience is fully retail credit center only. अच्छा. रिटेल क्रेडिट्स दैट टू इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होने से थोड़ा अच्छा होता है. अदरवाइज दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर अलाउइंग यू फॉर द इंटरव्यू. इट डिपेंड्स. आपको दिमाग में जा क्या लिखा है पता नहीं, ऐसा में भी होगा. बिकॉज हाँ हमने सर. सुना है ICICI बैंक वाला कोई लड़का उनको परमिट कर दिया, वो इंटरव्यू करके आ गया. देन सिटी यूनियन बैंक कोई लड़का अंदर गया, उनको वो गया. अभी अभी हाँ ऐसा होता है. सो यू से दैट यू वेर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग yes, sir. recommending proposals. Yes, sir. बिल्कुल, ये पॉइंट आपने बताना है. ठीक है. Yes. Now please tell me what are the qualities required for a credit manager, or what are the skills you require for a credit manager?
So analyzing the financials, reading civil of the applicant, and visiting and judging the customer based on his past credit history. And also in SRA there are two criteria, LTV and FOIR. uh, हम देखते हैं कि FOIR comfortable है और LTV comfortable है, then we the loan is more comfortable. Hmm. Hmm. Good. Now, uh, yeah, 1 minute. I'm asking some questions which were asked in the interview. Can you please explain what is a term loan? In what way is it different from cash credit? So term loan is given for a fixed period, and in that we collect regular EMIs from the customer. And cash credit is a limit given to the customer in which, like suppose for example, if a customer is given a limit of 5 lakh, the limit will remain same for the entire tenure, and he will be serving only the interest portion. But in term loan, the outstanding principal amount will be reducing, and EMIs will be paid in monthly installment by the customer. Good. Now, um, 1 minute. They are asking very interesting questions. Yeah. What are the balance sheet items you will be concentrating while assessing or proposal? So balance sheet items, we look for the fixed assets, then Hmm. current assets and current liabilities. Mhm. Mm, Assets will show us the actual net worth of the business, and current assets and current liability will show us the turnaround business processing cycle of the business. mm, yeah. 1 minute. How will you process an MSME proposal? Sir, for proposing MSME for processing it, we will collect the financial of the customer. Hmm. If the financials, the loan fits in the financials, we will sanction the loan. Financial, and Hmm. also we will take the collateral. If the loan is under the LTV and FOIR, we will sanction the loan. Mhm. Good. Then, how will you ensure that party is bringing margin money? Sir, we will take banking reflection of the margin money or the receipt, if any, received by the customer. Do you know the latest circular on gold loan by RBI? No, sir, I No. don't have any idea. You have to know about it. I read one circular which said Reserve Bank of India wants to take a policy of reducing the personal loans and loan on gold also to some extent. And accordingly, they say gold loans should not be allowed to remain permanent and they must be adjusted once every year. You cannot just renew it by receiving the interest on that. Okay, समझ sir. गया? So समझ गया, this sir. is the latest instruction they have given. So you have to go through latest guidelines or instructions of our um, central bank in this regard. Okay. Okay, sir. This question they have asked. Can you tell me what are the precautions you will take while releasing term loan? While अच्छा, releasing ये term ये loan, ये 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 सब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ये सब क्वेश्चंस हम एक एक लिंक आपको भेजा हुआ है, उसका अंदर ही मिल जाएगा. समझ गया? दैट इज yeah. क्रेडिट ऑफिसर्स फोल्डर बोल के एक होगा. डिड आई सेंड यू दैट? ओहो.
अच्छा, I have sent you only last minute preparation. That is briefly भेजा है. Now I will send you something which is more descriptive. बहुत कुछ है. ये सबसे आप पढ़ना है. This can be made use of by you for this or otherwise for our Bank of Maharashtra exercise. Understand? Yes, sir. 77279 अभी आपको दे दिया. इसमें there is one link known as credit officer interview folder, Okay, sir. and this is what it, and from there only I am asking these questions. Okay, sir. Very good. Next question. सर uh, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मैंने. but previous years questions and all मिलता है. 63 pages है. ओके सर. Hello, 63 pages high. Can you tell me what is the difference between a registered partnership firm and unregistered partnership firm? Sir, registered partnership firm is registered with the registrar office, and Hmm. unregistered is not registered in the registrar office. उससे फर्क क्या होता है? सर लीगल राइट्स पार्टनर के नहीं रहते अनरजिस्टर्ड में. ऐसा नहीं है. In the case of unregistered partnership firms, they cannot file a suit against their debtors in the name of the company. ओके सर. Whereas the companies can file their creditors can file a suit against them. Whereas this company cannot file suit against its own debtors. It's a defect in them. Whereas a registered partnership firm होने से तो the firm can proceed against its debtors in its own name. That is why we bankers, we always insist before giving loan to partnership firms that they must be registered ones. ओके सर. Good. Mr. Pankaj, what is TEV study? T for temple, E for England, V for Vatican. TEV study. डोंट नो सर. सुना है इसका बारे में? नहीं सर, नहीं सुन. टेक्निकल इकोनॉमिक वायबिलिटी. टेक्निकल इकोनॉमिक वायबिलिटी, ये सब आप पढ़ना पड़ेगा. बहुत कुछ दिया है इस कागज में. ये सबको आप प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा. ओके सर. ओके. व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट बैंक? सर, आई डोंट वांट टू लीव द प्रेजेंट बैंक, बट इफ आई गेट बेटर अपॉर्चुनिटी आई विल switch over to another bank. Very nicely you manage. It's not that I want to leave the present back, but I want to improve my career prospects. इसलिए हम दूसरा जगह आना चाहते हैं. समझ गया? Yes, sir. That is the reason. Otherwise क्या है? Because आप लोग सोचते हैं. आपको अभी आईडीबीआई में कितना साल सर्विस हो गया? स्केल 1. 5 years, sir. अभी आपको एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन कितना साल होना है? और This time I will be eligible, sir. अच्छा, ठीक है. फिर भी ट्राई कर लीजिए. वेरी गुड, एक्सलेंट. नेक्स्ट वन, सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू. What are the ratios you are familiar in balance sheet analysis? Sir, current ratio, gearing ratio, debt Hmm. equity ratio. इस इतना हो जाएगा? और भी ज्यादा बोलना पड़ेगा जी. थोड़ा पढ़ना है. आप क्या, डिड यू स्टार्ट रीडिंग और नॉट? No, sir. पढ़ने का I haven't. यू आर नॉट नहीं start किया, स्टार्टेड? sir. Yes, sir. क्यों? क्यों स्टार्ट नहीं किया? आपको तो जानते हैं इंटरव्यू डेट आ गया. आप क्यों हाँ. प्रिपेयर नहीं किया? हम तो रोज 5-10 वीडियोस डालते हैं हमारा चैनल में. हमारा चैनल कब से जानते हैं आप?
सर जानता हूँ, एक्चुअली मेरा फ्रेंड एक है, वो आपके चैनल के थ्रू हुआ तो उसने बताया था। तो सर अभी हम्म एक्चुअली मेरा ट्रांसफर हुआ तो उसके बीच में थोड़ा सा टाइम शेड्यूल खराब हो गया, इसलिए टाइम नहीं नहीं, मिला। इससे नहीं, if you had come about 1 week earlier, you could have learned more also. Because we are always thinking about credit, credit, credit. सुबह से शाम तक हम लोग क्रेडिट क्रेडिट बोलते हैं, इसलिए थोड़ा से आपको पता हो जाता था। कोई बात नहीं, you have to improve on this ratio. Okay. ओके। Now, mm, what is a public sector bank? A bank in which more than 50% of the stake is owned by the public. Public, public का Means, मतलब क्या है? sorry sir, बाय government. बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। Yes sir. अच्छा जी, आपको आईडीबीआई में शेयर कैपिटल कैसे कैसे है? हु आर होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स? गवर्नमेंट इज होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स? Sir, government is holding 46% shares approx, and LIC is holding 49% shares. Excellent. Good. Now in UBI, government is holding how many shares? Any idea? No idea, sir. Even I don't know. Anybody else knows? UBI में how many percentage of shares is held by government? Anybody else who is present here? Priyanka, others? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, what is the share price of our UBI as on date? I don't know, sir. ये सब देखना पड़ेगा बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। बीएससी का स्टॉक एक्सचेंज रेट कितना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रेट कितना है, और आपको क्या चीज है, यूबीआई का शेयर प्राइस कितना है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये सब पढ़ना है। यू आर अ क्रेडिट मैन। Yes, sir. व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? Market capitalization, sir, the total value of shares of the company with the multiplied by the current market price. ये आंसर सही दिया, लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं था। आपने ये बोलना था नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड मल्टीप्लाइड बाय शेयर मार्केट प्राइस। Yes, sir. ऐसा बोलने से हो जाता है। गुड। योर वाइफ इज वर्किंग? No, sir. शी इज नॉट वर्किंग। सो योर ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, कहीं भी जगह पर डालने से जाएंगे? No, sir. That is not a problem. एनीवेयर यू आर विलिंग टू गो? Yes, sir. वेरी गुड, दैट इज अ गुड पॉइंट। Yeah. Now, next question for you. Do you know about UBI retail loans? कुछ ना कुछ जानते हैं उसका बारे में? Yes, sir. Retail loans में UBI provides home loan, housing loan, mortgage loan, gold loan. Yes, sir. Hmm. Which loan you can talk about in detail? Home loan, mortgage loan, sir. बोलिए, होम लोन में प्रोसेस करने के समय पर क्या क्या देखना पड़ेगा, and what are the terms and conditions, if any, in your bank and also in Union Bank? सर होम लोन में प्रोसेस में ये है, मेनली तो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है वो अंडर गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो कर रही है। लाइक स्टेट टू स्टेट अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, वो लोकल अथॉरिटी में अप्रूव्ड है वो प्रोजेक्ट या फिर प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है। प्लस जो अनदर वन इज इनकम सोर्स, द सोर्स ऑफ इनकम, इफ द पर्सन इज सैलराइड, he is salaried in registered firm or unregistered. If he is running his own business, then we'll look for his total income. Then we'll take both the aspects, LTV and FOIR. In both the aspects, if the loan is fitting, we'll sanction the loan. See, supposing a person draws a salary of 1,20,000, Yes, sir. his recoveries, including income tax, before your term loan repayment is 40,000. Okay, sir. How much maximum loan can be considered for this guy? Sir, uh, uh, in
इनकम से सर उसका ये रीपेइंग कैपेसिटी पता लगेगी। रीपेइंग में विल लुक फॉर हिज ईएमआई, जो भी लोन के लिए उसने अप्लाई किया है वो ईएमआई कितना आ रही है। सपोज 40,000 उसकी बिफोर टैक्स है, सो वी विल ऑल्सो डिडक्ट टैक्स लाइबिलिटी एंड देन वी विल सी इफ एनी इनकम इज रिमेनिंग फॉर पेइंग द ईएमआई। ईएमआई पे करने के लिए अगर इनकम बचा है तो वी विल सैंक्शन द लोन, अदरवाइज वी कांट सैंक्शन द लोन। ये तो दैट फॉर्मूला ओनली आई एम आस्किंग। अभी देखिए आफ्टर डिडक्टिंग 40,000 इनका होता है 80,000, हाँ बट बैलेंस कितना तक आप ले सकते हैं फ्रॉम हिम? नॉर्मली पहले जब हम लोग काम करते थे वी यूज टू से ही शुड टेक होम एटलीस्ट 40% ऑफ हिज ग्रॉस पे। 1,20,000 का 40% इज 48,000। सर That एक्चुअली अभी means he can repay only 32,000. एक्चुअली सर अभी स्लैब वाइज है। सपोज किसी का अगर सैलरी 40,000 के अंदर है तो उसमें फॉयर लोअर रहेगा, और 1 लाख है तो फॉयर हायर रहेगा। रीजन बीइंग कि जब अर्निंग कैपेसिटी किसी भी पर्सन की बढ़ती है तो रीपेइंग कैपेसिटी भी उसकी बढ़ती है। No, एक्सपेंसेस I know you are not remembering all these things because everything is being done by computer. आप यस फीड करने से कंप्यूटर आपको सब बोल देता है। यस सर। अच्छा अच्छा, जैसे हमने आपको गोल्ड लोन के बारे में पूछा है, ये भी पूछा हुआ है recent RBI restrictions on personal loan. Recent RBI restrictions on personal loans. Wait a minute. Let us know this. What is this? The Reserve Bank of India implemented stricter regulations for unsecured personal loans provided by both banks and NBFCs. The updated guidelines involve a 25 percentage point increase in risk weights. Although certain consumer loans, such as those for housing, education, and vehicles, are exempt. इसका मतलब क्या है? 25 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज इन रिस्क वेट, इसका मतलब क्या है? सर जो in रिस्क in what way is it affecting the bank? Sir, I think it means that personal loans are more riskier because personal loans are not secured loans. Whereas other loans are secured by the securities, like mortgage loan may we have the mortgage property, gold loan may we have gold. So other loans are secured by the collateral, but personal loans are not secured by the collateral. That's why I think risk is higher in personal loans. ट्रू, आप ये भी ऐड करके बोलना पड़ेगा। 25% रिस्क वेट असेट, रिस्क वेटेज ज्यादा हो गया तो बैंक का कैपिटल बेस और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। डू यू Yes, फॉलो व्हाट आई से? yes, sir. और रिस्क कैप CAR में अफेक्ट हो जाएगा। कैपिटल रिस्क वेटेड असेट रेशियो, इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। CRAR में अफेक्ट पड़ेगा। इसलिए नाउ बैंक्स आर हेजिटेटिंग नाउ डेज टू गिव मोर ऑफ पर्सनल लोन्स ऑल्सो। समझ गया? समझिए। वेरी गुड। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। What are the mantras of self-help group? Self-help group. डोंट नो सर। मंत्र, मंत्रास ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई लड़का ने हमको इसके बारे में बताया था। सम reasonable, I mean, regularity of meetings, regularity of membership, then regularity of disbursement, regularity of repayment, ऐसा ऐसा कुछ। आप इसका बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। Anybody else knows about this? अभी जो आया हुआ है, in anybody else knows about what are the mantras of self help group? Otherwise हम सर्च करेगा। Anybody else please? हमने इंस्टेड ऑफ पुटिंग SHG हमने SHR डाल दिया, इसलिए हमको ये बोलता है कृष्णा मंत्रास।
self-help groups, functions, ideologies. दिस इज द पॉइंट, इसका बारे में आप थोड़ा प्रिपेयर कर दीजिए. Yes, sir. Sure, sir. यहां पर दिया है द प्रिंसिपल्स 5 P's आर, प्लीज नोट डाउन, प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटियरिज्म, practitioner of mutual help, provider of timely emergency loan, promoter of thrift and savings, then purveyor of credit. I am giving you a link from Campus Raw IAS in our PNB group. आपने मेंबर नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं सर, अभी तो पंकज अभी मेंबर हो जाओ ना पहले. आई विल अप्रूव इट. बोलिए। अभी हो जाओ. Did you get the link from me or not? लिंक सर नहीं दिया हमने. नहीं सर, लिंक बहुत सारे भेजे हैं आपने। एक मिनट, एक मिनट, नहीं सर, ग्रुप का लिंक नहीं है सर। एक मिनट, अभी दे देता है. हाँ सर, पीएनबी, यूबीआई, सीबीआई, हाँ क्रेडिट हाँ, उसको क्लिक करो जी. कर दिया सर। कर दिया. ओके, अप्रूव कर दिया. नाउ थैंक यू। आपको अप्रूव हो गया. अभी अप्रूव होने के बाद में ये वाला हम डालते हैं, ये मिल जाएगा आपको. हम और एक फायदा दिया है. हाँ, ये वाला सी, दिस इज द फॉर्मेट बाबा. राम मनोहर प्रभाकरन हैज गिवन यू द फॉर्मेट. और कैसे इसको नीचे डालना है फॉर यू टू सी. आई विल गिव दिस पीएनबी 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 पीएनबी. ये वाला और एक बार हमने कॉपी करके पीएनबी ग्रुप में और एक बार डालता हूं, सो दैट यू कैन सी इट योर सेल्फ. समझ गया? हाँ सर, मिल गया। ना इसमें दे नीड दिस एग्जैक्ट फॉर्मेट. वो फॉर्मेट आया नहीं ना. फॉर्मेट नहीं आया सर, खाली हाँ, लिंक ये आया है। करेक्ट करेक्ट, फॉर्मेट नहीं आया. हर आदमी लास्ट मिनट में आते हैं, हमको टेंशन बढ़ाते हैं. नहीं नहीं नहीं. Why is not Ram Manogar? You are there here. Ram Manogar is not there. Oh, 1 minute. I think it is better to send it to you. 77279 में भेज देगा. ओके. यस सर, भेज दिया। 77279 में 35106 भेज दिया. आपको आ गया? देखे? हाँ सर, आ गया। हाँ, उसको देख लीजिए. थैंक यू. प्रिपेयर योर सेल्फ वेल. थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा. टुमारो ओनली यू कैन डू ऑल दैट. Now you can observe the interview of other candidates if you are staying here for some time. ओके सर। Thank you. Stop यस सर। recording.